Hello everyone and welcome back to the channel, guys. Uh, Guys, I hope I'm audible and I'm visible. There's a lot of rain here and there's a lot of connectivity issue. So I hope that we are live now. So kindly give me a confirmation in the chat box that you can see me and you can hear me. And I know, guys, the exam is in 2 days and we are all very waiting for the exam. Good evening, Mehak. Good evening, dear. Good evening, Anishka. Hello, Akhil. Hello, Muskan. So guys, कैसा feel कर रहे हो? How are you feeling right now? I mean, the butterflies in the stomach, are they there or not? They are. Good evening, Siddharth. How's it going? Good evening, Sandeepan. Sandeepan, you have to do it this time. Okay? We have to crack phase one. Good evening, Millie. Hello, Narayana. Josh is hi. Good evening, Madhumita. Good evening, Kunal. Hi, Priti. I'm good. How are you? Hello, Aisha. At times confident and at times nervous, Mehak. That is true. This is what butterflies, that is what butterflies do to you, right? So, guys, there's nothing to be anxious about here, right? And what we can do right now is keep ourselves calm. See, guys, at this point of time, if you're thinking of outcome, what would be the judgment day after tomorrow, how will the exam be, right? Will I be able to complete it or not, will I be able to score enough or not? So just forget these questions, just let them out of your head. I know it's not easier said than done, but the point is to keep yourself calm. So guys, if you panic right now, this is going to be unproductive for you, so we can't do that. So today, guys, I have a little I'm not well. थोड़ा सा तबीयत आज down है. So what I have done is instead of giving you 50 questions in one go, what I thought would be better at this point of time कि अभी 2 दिन बाद एग्जाम है, तो अभी आपको टॉपिक वाइज कराने के बजाय I believe it's better to give you a mock test. So today we will be taking a mock test together. I'll give you the time and then we will solve all the questions as we go along. Right, so today we'll be taking a mock test. So how does that sound, guys? Is it okay with you? Because थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, गले में बहुत ज़्यादा पेन है because of the changing weather and everything. I think I've caught a viral. तो I'm not मतलब उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, उतना एनर्जी भी नहीं आ पा रही है. तो guys, is it okay if we try a mock test? Yes, because that will give you a lot of confidence कि यार randomly जब questions करने फेस करने तो कैसे करना चाहिए. इंग्लिश के लिए थोड़ा डर लग रहा है प्रोजेक्ट है. इट्स परफेक्टली ऑल राइट, दैट्स परफेक्टली ओके. थोड़ा बहुत तो कॉन्शियसनेस होना भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चिल मार के बैठे हम, राइट, कि यार इंग्लिश तो हो ही जाएगा. वी कांट डू दैट. बट इंग्लिश एट द एंड at the end of the day, it's a very scoring subject and you can really fetch very good marks if you prepare well and if you do well in the exam, right? So guys, देखो इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए. फर्स्ट बिफोर वी बिगिन द मॉक टेस्ट, गाइज, आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिटिल कॉन्सेप्ट. 2 4 मिनट लगेंगे, गाइज, प्लीज बेयर विद मी. But then we will start the mock test and then at the end you tell me your answer and then we will match the score कि who scores the highest. तो आज ये चैलेंज है आप सबके लिए. Let's see सबसे ज़्यादा कौन स्कोर करता है. And be honest, right? Exactly, मोहित. देखो कंप्लीट करना भी नहीं है, मोहित. Guys, please 4 to again 5 minutes. So that adds up to 18 minutes, guys. Now these three are the biggest chunks of your paper, right? Then the other part is your grammatical part where you can have error detection based questions, right? Where you can have sentence improvement based questions, yeah, sentence fillers based questions. Then you'll definitely have sentence connectors based questions. Now these are, guys, these are called shorter questions. So there would be 3 to 4 error detection questions, there would be 3 to 4 sentence fillers, and there would be 3 to 4 sentence connector based questions. So this brings it down to 12 questions. Sorry, 12 questions, and this is 18 questions. So 18 question, 18 minutes. 12 question, how many minutes? 7 minutes. So guys, this is the catch that we now need to understand. Now guys,
the biggest chunk of the paper would be reading comprehension, cloze test, and rearrangement. This is the comprehension and the vocabulary part, and the second part is grammar and your context based questions. Now guys, what is the catch here? Now these 18 questions will take you 18 minutes or so, and these 12 questions will only take you 7 minutes. Now guys, what should be your strategy? Guys, I think there is some internet issue because of the rain. That is why the session was a little late. Guys, please tell me if it is okay. Guys, there is a lot of rain and internet issue at my end. So, am I audible now? Is it still buffering? Guys, अभी भी बफर हो रहा है या अभी ठीक है थोड़ा सा? Guys, is it still buffering or is it okay now? Kindly give me confirmation. अच्छा अब ठीक हो गया. थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है गाइस. सो इफ देयर इज एनी इशू, राइट, विल ऑल राइट. तो गाइस देखो, first of all, your approach should be, you should, okay, guys, have you ever thought about this? Okay, कभी आपने नोटिस किया है कि why is always the reading comprehension the first question of your of your exam? I'll repeat it, don't worry guys, I'll repeat whatever I have discussed. But my first question to you is, why is always reading comprehension the first question of your English section? Have you ever thought about this? कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश में आपका पहला सेक्शन जो है वो हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों होता है? Very well done. See guys, you need to understand the psychology of the paper and this is what they want to see. कि कौन बच्चा बिल्कुल ब्लाइंडली इस पेपर को अप्रोच कर रहा है. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट द टेस्ट, जो क्वेश्चन सामने आता है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट. और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है गाइस? देखो, मैं आपको क्लियरली बता दिया, ये 18 क्वेश्चंस में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको 18 मिनट्स लगेंगे. तो अगर आप ये पहले करते हो, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अगर आप बड़े क्वेश्चंस पहले करते हो, और अगर बाय चांस अगर आप कहीं पे भी मतलब अटक गए, इफ यू आर स्टक एनीवेयर, राइट, एंड इफ यू टेक अ कपल ऑफ मोर मिनट्स देन रिक्वायर्ड, यू विल पैनिक. बिकॉज आप क्या समझोगे, यार 18 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, राइट, बट आई ओनली अटेम्प्टेड 12 to 13 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, और उनमें से भी पक्का नहीं है कि कितने गलत होंगे, right? Then when you attempt these 12 questions in the last 7 minutes, you will always panic and you will always make mistake. And this is what they want to see, कि कौन बच्चा, कौन एस्पिरेंट ऐसा है जो सही अप्रोच लेके सामने आता है. So basically guys, you do not get stuck while attempting reading comprehension. So do not choose part 1 first. Always start with shorter questions and always move towards longer questions. That should be your approach. Always start with shorter questions and always move towards longer questions. So start with error detection first. So if the first question is reading comprehension, skip it, move ahead. Look for your shorter question, one-liner based questions. So always start with the shorter questions first, because okay, let's look at this scenario. You spend first 18-20 minutes to solve these 3 questions, and let's say you are only able to attempt 12-13 questions and you're not sure how many you've got right and how many you've got wrong, right? And then you will panic. But on the other hand, if you started with shorter questions first, now what would happen? Now if in the first 7 minutes, guys, please look at this. If in the first 7 to 8 minutes, if you attempted these 12 questions, which are short questions, right, then this will give you a lot of confidence, right, that okay, I've already done my 12 questions out of 30, right, I've only used 7 to 8 minutes. Now I have good 18 minutes left and I have only 18 questions left. Now if I only target 15 or 14 questions in next 18 minutes, I'll still be able to score excellent. So guys, your approach should be to start with shorter questions and then move towards longer questions, guys.
So always have this approach ready with you that okay, if the first question is reading comprehension, do not attempt it. अगर आपको पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है. गाइज, व्हाट स्ट्रेटजी हैज बीन टोल्ड टू यू इन योर क्वांट्स और इन योर रीजनिंग सेक्शन? आई थिंक सर ने भी आपको यही बताया हमेशा. आई थिंक विष्णु सर हैज ऑल्सो टोल्ड यू द सेम थिंग. स्टार्ट विद शॉर्टर क्वेश्चन, पहले सिंप्लीफिकेशन वाले करो जिनमें सिर्फ कैलकुलेशन है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आओ, फिर पजल्स पे आओ, और सबसे एंड में वो क्वेश्चन करना विच आर द बिगेस्ट, विच कंज्यूम द लॉन्गेस्ट टाइम. बिकॉज अगर उनमें एक बार कहीं फंस गए, यू विल नॉट बी एबल टू गिव इट अप. देखो डिफरेंस कहाँ पे है. मैं एरर डायरेक्शन के क्वेश्चन अलग अलग है. मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, अगर मुझे उसमें क्वेश्चन आंसर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं उसको रुक के आगे मूव कर जाऊंगा. राइट, आई ट्राई इट लेटर ऑन. बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ऐसा नहीं कर सकते. आप ये नहीं कर सकते कि बीच में छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं फिर वापस आ जाऊंगा, बिकॉज इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम. राइट. In the real exam, it will matter, Rohit, and that is that is a fact, guys. Please understand this. That your strategy, your approach to the exam will be very very crucial. देखो guys, reading comprehension क्या चीज है? I feel that is the easiest part in your whole paper. You know why? Because देखो बाकी सब में आपको solve करना है, मैथ्स में solve करना है, रीजनिंग में solve करना है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है जिसमें कुछ नहीं सॉल्व करके जाना, कुछ नहीं पहले पढ़ के जाना. वहां पे जो सामने दिया हुआ है बस उसी के अंदर आपके आंसर है और आपको आंसर ढूंढने. तो सोचो गाइस, व्हाट कुड बी इजियर देन दैट? You are given a passage, the answers are there in that passage, and you just have to look for your answers. You just have to find your answers. Now that is the easy part, but the catch here is it takes time. So always start with shorter questions and then move towards longer questions, because shorter questions, they are efficient, they are accurate. I mean, they will give you efficiency, that okay, minimum time and maximum output. And once you know that okay, you're done with the first 12 short questions, now you have ample time for the next 18 long questions. Then you segregate time. First 4-5 minutes to rearrangement, then next 4-5 minutes to close test, and then last 7 to 8 minutes for your reading comprehension, where you target only factual questions, guys. Now, if you ask me, sir, how many questions should we target? Should we target 30 out of 30? Should that be our approach? Now, guys, if the paper is extremely easy, like last year, you can target 30 out of 30. But if you find it difficult, do not, hurry into it. Now, guys, what has been the cutoff for English for the past few years? 4.5 marks out of 30. That has been the cutoff for English. Now, guys, can you imagine or can you just guess why the cutoff is so low for English? Why has the cutoff been so low? 4.5. Don't you think students would be able to get only 5 questions right? But guys, this is where they get stuck. Right? They try to attempt more questions, they get more questions wrong instead of right, and then finally the final cutoff is, at the end of the day, it's quite low. So guys, your target should be to attempt not 30 questions, your target should be to attempt 22 to 25 questions out of 30. That should be your target questions, and you'll have to choose which questions to omit. For example, inferential questions in your reading comprehension, you should omit those, because they take, obviously they take more time than more time than necessary, right? So that is the problem. So omit inferential questions in your reading comprehension. Similarly, there would be some questions that you might need to omit, because probably you won't be able to find the answer, right? So your target should be between 22 to 25 questions, and your accuracy, if it is only 80%, if it is only 80%, that 80% of your questions are accurate. So if you are attempting 22 questions, you'll still be able to get 18 marks, 17 to 18 marks, which is a very good score in English language. So guys, that should be your approach for this exam. Start from shorter questions, be efficient, be accurate, then move towards your longer questions, and do not try to attempt all the questions in one go, right? First target your 20 to 25 questions, right? How many, as many as you are able to target, and then you attempt your questions with accuracy, that your accuracy should be above 80%. If you can do that, I can write it down, I can put it down in writing that you will be able to crack this exam, guys, right? We just keep the sectional exactly. But why is the reason? What is the reason for that, Sandeepan? Only 4.5 out of 30. That is not even 30%. Am I right? That is, I think, 15%.
So 15% cannot be a cutoff for English. That is too low, right, Sandeepan? So what is the point? See, the point is usually students do not score too high in this paper, right? Last year the paper was very easy. The highest anybody scored was still 21. Before that, in 2021 the paper was really difficult, and the highest anybody could score was 18. So when highest is 18, the cutoff is, it is touted to be 4.5. That is why it is so low, right? So guys, that was your strategy. So let's now practice your questions. Let's now solve a mock test live right here, and let's see how many questions you are able to solve. So let's start, guys. Okay, the first 5 questions. The following passage given below has words and phrases highlighted as they might need a change. Also, there might be blanks that need to be completed. So read the given paragraph carefully and answer the question. So guys, do you want to start with this question, or should we move to the shorter questions first? What do you say? I'm not the right person to ask about quants, Shivam. I'm sorry. You can call us. We have given you the contact number here at the bottom of the screen, 8146207241, or you have our email ID hello@edutap.co.in. You can drop your query there, and Vishnu sir will help you out. Chalo. So let's skip first 5 questions. पहले कैसे करना guys? I'll give you the approach. Let's say exam. Assume करो ये हमारा exam है. राइट हमने पहला क्वेश्चन देखा, पहले डायरेक्शन देखे, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या है, सारे आपके क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है, पैराग्राफ बेस्ड है, तो टाइम लगेगा, पहले 5 क्वेश्चन स्किप कर दिया, आगे चलो. इसमें देखो, बिलो अ स्मॉल सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. नाउ दीज पार्ट्स आर नॉट इन देयर करेक्ट ऑर्डर एंड गिवन एज A, B, C, D and E. Also one blank is given in one of the parts. Now you are required to fill the given blank and arrange each part in order to form a meaningful sentence. तो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करें गाइस. तो पहले अब देखो, पहले देखा हमने पैराग्राफ है. नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या है हमारे, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये ट्राई करेंगे पहले. देन 11 to 14, again what we have to do, these questions have been jumbled, so we have to rearrange these words and then rearrange the parts of these words. So these are also, we can do them easily, 1 minute 1 question. Then question number 15 to 18, now you are given 5 sentences, you have to find the odd sentence, you have to find the odd man out. So we can do that, but later on. Then question number 19 to 23, match the column based questions. You are given 2 columns, column 1 and column 2. These are double fillers basically, so we have to find the word that can fill in column 1 and the word which can fill in column 2. So there are 4 questions on this. These are also short questions, we can do that. Then question number 24 to 30, this is the reading comprehension passage. So this we'll do at the last, right? So let's start with the shorter questions first, right? So first 5 questions we can skip. Let's start with question number 6. And guys, keep on marking down which questions we have attempted. So let's start with these first, guys. So you are given a sentence which has been broken into 5 parts, A, B, C, D, E, which are jumbled, right? So we have to rearrange these parts and then we have to also fill the blank here. So first, what should be done, guys? First, let's try to rearrange these parts and let's try to fill in the blank and find the right option here, right? So क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, guys? अब आपको लग रहा है सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, पहले रीअरेंज भी करो फिर वर्ड भी ढूंढो, बट अगर आप स्मार्ट हो ना तो अप्रोच देखना क्या होनी चाहिए. आपको सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है, ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है. इससे क्या होगा, आपके 2 या 3 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे. सो विजन द क्वाड साइंस अप टू बी इन द, I don't think that can be the first sentence. Cooperation across countries in the Indo-Pacific. Let's see. Indo-Pacific region and the multinational defense exercise Milan held in Visakhapatnam dash the. Okay, India is clearly the natural leader in the region in terms of the Australian High Commission to India, Barry O'Farrell, said. Yes, guys, what should be the first, opening statement? So I think C. So it should start with D or E, guys. Okay, you're giving me the answer now. So guys, I think looking at the blank also, we can eliminate showing, refutes and verifying. These 3 can be eliminated. Only option A and D can be your opening, the right words to fill in. So Indo-Pacific region and the multinational defense exercise in Milan held in Visakhapatnam demonstrates the vision
The quad signs up to be. Yes. So first sentence should be, guys, either it can be D or it can be C. So I'm sure, I think it's D. So what is the right answer? Or is it C? CA, the Indo-Pacific. Very good. In terms of the yes, guys, which is the right statement? Very well done. The correct answer is option number D. So the correct statement should be Indo-Pacific region and the multinational defense exercise Milan held in Vishakhapatnam demonstrates, this should be first, demonstrates the vision the quad signs up to be in the, so that should be second, in the cooperation across the countries in the Indo-Pacific. Very good. In Indo-Pacific, India is clearly the natural leader in the region in terms of the Australian High Commission to India, Barry O'Farrell said. Yes, guys. Do you think D is the right answer? Or can A be the right answer? We start with D. India is clearly the natural leader in the region in terms of the vision the quad signs up to be in the Indo-Pacific region. The multinational defense exercise Milan held in Vishakhapatnam demonstrates the cooperation across the countries in Indo-Pacific. Australian High Commissioner, yes. So guys, no, the correct answer is not D, it is A. D is not the right answer, guys. Demonstrate दोनों में same था, लेकिन C, A, B तक ठीक है, लेकिन D does not connect with the sentence. So the correct option was not D, it was A. अब change मत करो guys, जिसने D कर दिया, please make sure you accept your mistake. So that was question number 1. The correct answer was option number A. Next question, guys. Now I'll not help you. You solve it on your own. I've given you how to solve that. I've taught you how to solve that. Now try to solve this and find out the right answer. In the blank, Ayush, look at the blank. A blank में आपको वो grammatical logic, grammatical structure, syntax of the sentence तो हमें पता है ना. So looking at the syntax of the sentence, you can eliminate the options. The Ukrainian border, even as the crisis, boosts, augments, strengthens, deepens या amplifies. अगर आप sentence पढ़ के context समझ रहे हो तो अपने आप fit नहीं होगा word, आपको logically समझना पड़ेगा. Yes, guys, what should be the right answer? Quickly, I'm waiting for your response. मुझे तो आंसर मिल चुका है. इसमें क्या करना था गाइस, ब्लैंक से एक बार, फिर जो ब्लैंक आपको फिट लग रहा है यहाँ पे, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसको एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखो. वेरी गुड. सो एज द क्राइसिस, यूक्रेनियन बॉर्डर पे जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तो एज द क्राइसिस बूस्ट होगा. बूस्ट कैन बी एलिमिनेटेड, क्राइसिस बूस्ट नहीं होता, ऑगमेंट होता है शुरू होना. ठीक है, ऑगमेंटेशन. सो एज द क्राइसिस ऑगमेंट्स, नो. क्राइसिस स्ट्रेंथन्स, नो. डीपन्स या एम्पलीफाइज, ये दो हो सकते थे. तो CAB या CBA यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं हम. फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट आज द अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन to use his good offices, CA हो सकता था, CB हो सकता है, ask generally Attorney General KK Venugopal to the aid of Indian students. No, so I think it should be CAB. The sentence should be, the Supreme Court asked Attorney General KK Venugopalan to use his good offices and urge the center to come to the aid of Indian students believed to be stuck without food, water and money at the Ukrainian border even as the crisis deepens. So the correct answer was option number D. That's how you eliminate the options, Akash. Okay, let's move to the next question, guys.
Yes guys, next question in front of you, quickly solve it. Yes guys, what is the right answer? कुछ बच्चे सिर्फ टाइटन को देख के ना, ए देख के उसको भाग जाते हैं, प्रियंका वी कांट डू दैट, पूरा उसका फिर ऑप्शन भी तो ए से सेंटेंस शुरू हो सकता है. रिवील्ड द नवीन पटनायक लेड. नो, द करेक्ट आंसर वाज, यस गाइस, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी, expanded its grip. So क्या होना चाहिए था? First sentence should be B. Odisha's ruling Biju Janata Dal is heading towards a landslide victory in the three-tier panchayat polls, leaving opposition BJP and Congress far behind as the counting on Monday. This should be part number 3. Then it should be A. On Monday, revealed the Naveen Patnaik led. Then it should be Naveen Patnaik led party had expanded its strong grip in the coastal state. So that should be sentence number 5. So the correct sequence should be BEDAC and the right word is expanded. Next question guys. Quickly, let's try to solve this. गाइस पता है कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? अगर आपको दिख रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह सेइंग द पार्टी वुड के बाद हमें पता है वर्ब आनी चाहिए, तो कौन सा वो पार्ट है जिसका फर्स्ट वर्ड एक वर्ब है? देखो, होम मिनिस्टर अमित शाह सेइंग द पार्टी वुड द बीजेपी, नो. पार्टी वुड द चांसेस, नो. पार्टी वुड फॉर्म द गवर्नमेंट, यस. पार्टी वुड एंड ये नहीं हो सकता, तो आई थिंक आई एम श्योर कि ए के बाद डी आना चाहिए, राइट? सो इफ यू फाइंड दिस कॉम्बिनेशन, अब ऑप्शंस में देखो ए के बाद डी किस किस में है. इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है. आप बाकी सारे ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो. अब ए डी सी बी ई और बी से शुरू करके देख लो, एक ए से और एक बी से. द बीजेपी exuded confidence over its chances in the 5 assembly elections, with Home Minister Amit Shah saying that the party would form the government in Uttar Pradesh, Goa, Manipur and Uttarakhand and improve its performance in Punjab. बिल्कुल सही लग रहा है. क्या ए से शुरू हो सकता है? Home Minister Amit Shah saying the party would form government in saying ये यहाँ से नहीं बन सकता. What is the right option here guys? The correct answer is option number E. So the statement should be the BJP exuded. What is exude? To show, दिखाना, दर्शाना कि भाई उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया. The BJP exuded confidence over its chances in the 5 assembly elections, with Home Minister Amit Shah saying the party would form government in Uttar Pradesh, Goa, Manipur and Uttarakhand and improve its performance in Punjab. So the correct answer was option number E. Very well done guys. Keep it up. Next question. Quickly. फटाफट से करके दिखाओ गाइस. वही जो ट्रिक मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी. फाइंड द लिंक. कैन यू सी के बी लिंक हो रहा है ई के साथ? यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल दैट हैज डिसाइडेड टू अर्जेंटली डू समथिंग ना, टू अर्जेंटली डू समथिंग. अब अगला देखो, अगला पार्ट किस में वर्ब है? एक्सूड मीन्स दिखाना, कॉन्फिडेंस दिखाना, कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने, शो करना.
टू गिव आउट, टू शो, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई उसके चेहरे से कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. सो एक्सयूड मीन्स दिखाना, टू शो, टू डेमोन्स्ट्रेट. ठीक है प्रिया? तो कैन यू सी के बी इज कनेक्टेड विद ई. तो अगर आपको ये पता है बी के बाद ई आना चाहिए, कि देखो किस किस में बी के बाद ई है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो तीन में है, हम बाकी दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं. राइट? यस गाइज. Now abstained, refused या halted. Yes guys, what is the right answer? Very well done. The correct answer is option number D. A, B, E, C, D. India on Friday abstained in a vote. Abstain means to not do, to stay away from doing something. Right? So that is abstain. So India on Friday abstained in a vote in the UN Human Rights Council that has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of Russia's aggression against Ukraine. So that was the right answer. Very well done guys. So keep a track of your score. At the end of the session I'll ask you what is your final score, कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, and then you can see कि if you face such a question paper, अगर आप बिना प्रेशर के, बिना पैनिक के अगर आप अटेम्प्ट करके जाओ तो कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो. चलो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. ये भी सिंगल लाइनर है तो पहले ये वाले करते हैं. The following questions have a sentence each that has been divided into 5 parts which have been jumbled. Now there are certain words as well that have been highlighted and might need to be swapped with each other in order for the sentence to become meaningful. So पहले तो हमें वही पिछले सेंटेंस की तरह A, B, C, D, E इनको रीअरेंज करना है, हमें सही अरेंजमेंट ढूंढना है, और फिर ये जो वर्ड बोल्ड किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, अब उनको भी हमें आपस में इंटरचेंज करना पड़ सकता है. सो फर्स्ट let's try to rearrange the parts and then try to rearrange the sentences. Right? Industry ban at least 60%, industry concern, industry claims. Claims at least 60 could not be produced without this chemical. Yes, I think A is connected with B. A is followed by B. किस किस में A के बाद B है? इसमें है, इसमें है, सिर्फ दो में ही है, तो आई थिंक वी कैन एलिमिनेट द रेस्ट. Yes guys, DECAB. The globe is a यहाँ पे claims आना चाहिए, ये तो clear है. So this should be one. Industry claims at least 60% of its products could not be produced without this chemical and oxidized. So it should be A, B, D. Ban and claims interchange. Okay. So it should be 4. So the ban on barium nitrate, right? This should be first part. So the ban on barium nitrate, an oxidizing agent. So DE used in making fireworks across the globe. So DE and then C. So yes guys. So the answer should be
The ban on barium nitrate, an oxidizing agent used in making fireworks across the globe, is a concern as the industry claims at least 60% of its products could not be produced without this chemical. So the correct option was option number B. Very well done, guys. Next question. Now, quickly solve this, guys. Yes, guys, what is the right answer? Very good. The correct answer is option number D. It should start with C part. People were not traveling. This should be first part. People were not traveling, and domestic and international. Domestic and international, that should be C, then B, then A. Domestic and international travel came to a halt. That should be third part. Then after A, it should be D. The revenue earned. Now this should be, this should be used in 3. This should be used in 4. The revenue earned from, this should be, part 4, from international travels dropped severely. That should be the fifth part. So the correct option was option number D. Very well done, guys. Next question. Quickly solve this one, guys. और ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से करना. Yes, guys. Have you found the right answer? Very well done. The correct answer is option number A. See, the switching, आप यहाँ से पता लगा सकते थे, guys. Disbelief should be, interchange with narrative. As per the narrative built by, so this should have been 3. Narrative built by the SP. The disbelief soon turned into anger. So the first part should be sentence number E, that the disbelief soon turned into anger against the electronic voting machines, which, as per the narrative built by the SP leadership, especially party president Akhilesh Yadav, stole what was their rightful mandate. So that was the right option. Akhilesh and Yadav. Very good, Ayush. So guys, in such statements, you have to find the linking part, the linkage between the two parts, and that will be your trick. That will be, your clue here. Very good, Ayush. So we always have to look at the clues. So that is very, very important. Next question, guys. And last one of this type. So quickly solve this one, guys. वो भी एक क्लू था. वेरी गुड, नारायणा. वेरी गुड, सनी. एंड गाइज, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सो दैट इज रियली रियली बैड.
ठीक है, वी आर डूइंग सो मच फॉर यू, वी आर कमिंग अप एवरी डे फॉर दीज सेशंस फॉर यू. सो इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन, that would be too bad on your part. So guys, don't forget to like the session, and if you're new to the channel, don't forget to subscribe it. That is the least you can do, guys. See, very well done. The sentence was absolutely correct as it was. His wisdom, his sense of humor, his joy de vivre, his easy sociability, and his wonderful gift of being a raconteur endeared him to all who came across him. No swapping required, no interchange required. The sentence was correct as it was. Keep it up, guys. Very well done. चलो, अब देख रहे हो गाइज, हमने 10-12 मिनट में, अभी तो डिस्कस कर रहे हैं हम सारे, हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 10 मिनट देखें तो हमने आराम से फ्रॉम 6 टू क्वेश्चन नंबर 14 9 क्वेश्चन हमने विद एक्यूरेसी हमने सॉल्व कर लिए हैं. तो अगर इस तरह से अगर आप करोगे ना गाइज, if you target shorter questions first, you'll get accuracy and you'll get a sense of understanding कि यार मेरे इतने क्वेश्चन हो गए इतने टाइम में, सो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स अचीव करके नाउ यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड कि अब मैं आराम से कर सकता हूँ, राइट. रेकंटुअर इज वक्ता, जिसको हम बोलते हैं ना बातचीत करने वाला, जो बहुत अच्छी बातें करता है. So gift of being a good raconteur, मतलब somebody who speaks well, somebody who connects with people, on a good note, तो उसको raconteur बोलते हैं. चलो गाइज, अब ये ऑड मैन आउट वाले फाइंड आउट करना है, और या रीअरेंज सॉरी या वो क्लोज टेस्ट वाला करना है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है. व्हाट डू यू वांट टू ट्राई? ये वाले करने हैं या अच्छा या मैच द कॉलम करते. चलो पहले मैच द कॉलम करते हैं, ये थोड़ा सा इजी रहेगा, जल्दी हो जाएंगे. तो पहले ये वाले टारगेट करते हैं. लेट्स ट्राई दिस गाइज. Now, what are the directions? A sentence is followed by a table with 2 columns, A and column 1 and column 2. The sentence has got 2 blanks that would take words from the columns respectively. So choose the correct combination of words that complete the given sentences meaningfully. So you have to find, for blank 1 you have to find the right word from column 1, and for blank 2 you have to find the right word from column 2. So quickly give me the combination, guys. The question is, I followed the dash of the elections in 3 of the 5 states, and I shall therefore dash my observations to those states. I followed the mandate, course, a trend of the elections in 3 of the 5 states, and shall therefore confide, obtruse, or restrict. Quickly give me your final answer, guys. Yes, guys. The correct answer here was, many of you are confused. I followed not the mandate of the elections. Mandate क्या होता है? जो उनका डिसीजन होता है. कोर्स या ट्रेंड हो सकता था. Now we could have eliminated option number A, right? So if we eliminate option number A, 2 ऑप्शन यहाँ से eliminate हो जाते हैं. Then of the elections in 3 of the 5 states, and shall therefore confide होता है किसी को अपनी राज की बात बताना. We can eliminate option number D. तो बचता है अपने पास या ऑप्शन B या ऑप्शन E, राइट. C, E और B, F. सो ऑब्स्ट्रूस का मतलब होता है किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना. द राइट वर्ड वाज रिस्ट्रिक्ट. अगर आपको ये चीज मिल जाती, देन यू कुड हैव वेरी इजीली चोजन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई फॉलोड द कोर्स. आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा सा तबीयत खराब है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस. आई एम सॉरी. I followed the course of the elections in 3 of the 5 states, and shall therefore restrict my observations to those states only. So the correct option was option number E. Obstruse. Obstruse is obstruct से बनता है ये. This is basically to ऑब्स्ट्रक्शन करना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, रास्ते में काटना, या किसी का काम को रोकने में या
बाधा डालना, तो बेसिकली दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट, हाँ देखो वो एक्सट्रीम नहीं है, लर्न विद के। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है टू टू बेसिकली टू बेसिकली, मैं देखो वो क्या बोल रहा है कि यार मैंने सिर्फ 3 स्टेट्स के ही इलेक्शंस को फॉलो किया है, तो मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन है मैं उन्हीं तक सीमित रखूंगा। मैं उनके उनके अलावा जो और कोई स्टेट में जो इलेक्शन हुए मैं उनके बारे में टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा, मतलब सीमित रखूँगा जहाँ तक जिन जिन इलेक्शंस को मैंने फॉलो किया है, राइट। मैंडेट क्या होता है निखिल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैंडेट? ट्रेंड भी हो सकता था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर ऑब्स्ट्रूस नहीं हो सकता था। ऑब्स्ट्रूस इज रॉन्ग वर्ड हेयर मोहित, ठीक है। देखो फर्स्ट वर्ड में हो सकता है आपको 2 वर्ड्स बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन दूसरा वर्ड भी तो फिट करना चाहिए। ऑब्स्ट्रूस डज डिड नॉट मेक एनी सेंस। सो कन्फाइड होता है अपने राज बताना, ऑब्स्ट्रूस होता है किसी की बात काटना या किसी के काम में बाधा डालना, या रिस्ट्रिक्ट होता है सीमित करना। सो द करेक्ट आंसर वाज रिस्ट्रिक्ट। सो फ्रॉम दैट वी कुड सी द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नाउ यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, गिव मी द फाइनल आंसर। थैंक यू शशि, थैंक यू ट्रांसफॉर्मर, थैंक यू प्रियंका। गाइस इट्स जस्ट अबाउट, मैं थोड़ा स्कैर्ड हूँ बिकॉज आपका एग्जाम आ गया और बीमार हो गए तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठंडा पानी मत पीना अगले 2-3 दिन, फ्रिज का पानी। डोंट गो आउट इन द रेन, बीमार हो गए यार, पेपर सारा साल की मेहनत चली जाएगी, तो प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ। ये टफ नहीं है गाइस, ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, टफ तो आपने देखे नहीं है अभी। दिस इज मॉडरेट। ऑब्स्ट्रूस नहीं हो सकता था सृष्टि वहां पर, दैट वाज रॉन्ग। Tamil Nadu students pursuing MBBS in Ukraine have returned home after dash and dash. Checks and endeavors, diplomacy and tribulations, trials and balances. Okay. Very well done, guys. The correct answer here is trials and tribulations. ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है भाई? सारी जमा घटा करके एट द एंड जो रिजल्ट, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट निकलता है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब लेन देन। डिप्लोमेसी एंड एंडेवर्स डजंट मेक सेंस, डिप्लोमेसी एंड ट्रिबुलेशन डजंट मेक सेंस, डिप्लोमेसी एंड बैलेंसेस डजंट मेक सेंस, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस होता है जद्दोजहद, मुश्किल से मशक्कत करके। सो तमिलनाडु स्टूडेंट्स परसुइंग एमबीबीएस इन यूक्रेन हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, मतलब मुश्किल जेल के परेशानी से निकल के वो घर लौटे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। वेरी वेल डन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, keeping in mind the dash of the question papers, the marks indicated that a certain level of dash has been done by the board. Keeping in mind the level of questions, the syllabus of question papers, the difficulty of question papers, the marks indicated that a certain level of bias has been done, moderation has been done, या normalization has been done. It has to only make sense to the sentence. Gelius Sangma. It has to be correct in context of the sentence. Nothing else matters there. वो contextually और grammatically sentence के according ठीक होना चाहिए। एक वर्ड को फिक्स करके चलो ना। अगर आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है, एक वर्ड को ढूंढ के चलो यार, एक ब्लैंक मुझे ढूंढना है बस, जो मुझे को फिक्स हो जाए मेरा, वो फिक्स हो जाएगा, उससे एलिमिनेट करो अपने ऑप्शंस एंड देन गो टू योर फाइनल सॉल्यूशन। वेरी गुड सनी, वेरी गुड सोनल, वेरी गुड नितेश, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड नारायणा, very good Vishaka, very well done dear, very good Transformer Gaming, very good Aisha, very good Ishita,
Very well done, guys. Keep it up. Very good, Vaishali. Very good, Muskan. The correct answer was option number E. Both C and D are correct, guys. See, C with E. Keeping in mind the difficulty of the question papers, the marks indicated that a certain level of moderation has been done by the board. And keeping in mind the level of the question papers, the marks indicated that a certain level of normalization has been done by the board. So both the options could have fit there. So both C and D were correct. But B, keeping in mind the syllabus of the question papers, the marks indicated that a certain level of bias, that doesn't make sense. So bias हम eliminate कर सकते थे, right? So the correct answer was option number E. Yes, then also elimination is helpful, Priya. आप eliminate करके at least दो option पे तो रह जाओगे कि यार या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, और फिर जब आप सेंटेंस को मनी मन ऑप्शंस को फिल करके पढ़ के देखोगे ना, देन यू कैन गेट अ सेंस कि यार ये मुझे ठीक लग रहा है, राइट. बट तुक्के मत मार के आना, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, राइट. यू लूज मोर मार्क्स देन यू कैन फेच, ये चीज़ याद रखना. नहीं, सेम चीज़ होती है लर्न विद के मॉडरेशन मॉडरेट कर देना, नॉर्मलाइजेशन उसको नॉर्मल बना देना. मतलब अगर पेपर डिफिकल्ट है तो उसके जो उसकी कट ऑफ है उसको नॉर्मल कर दिया. पेपर में भी तो होता है ना नॉर्मलाइजेशन या मॉडरेशन, तो ये उसी की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. And in India, in the first major elections held after the three waves of COVID-19, people from dash regions and far off states seemed to be dash in one voice. Very well done, guys. The correct option was option number C. That people from diverse regions and far off states seem to be speaking in one voice. Not देखो, टू बी अनंसिएट हो ही नहीं सकता. टू बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. आर्टिकुलेट होता है कोई बात, मतलब लिख के उसको प्रेजेंट करना. इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाई नॉट ए डी. ओके, लेवल ए विद डी, लेवल के साथ बायस थोड़ी हो सकता है. बायस क्या होता है? जब आप किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो. अब यहाँ पे प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं आ रही ना. करेक्ट. मोनिका, मायरियाड होता है अलग अलग तरह के, नाना प्रकार के. निखिल बोलते हैं ना, देर आर मायरियाड प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. मायरियाड मतलब बहुत सारे, अनेकों तरह के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो मायरियाड उनको बोलते हैं. वो भी यहाँ पे हो सकता था मायरियाड रीजन्स, लेकिन फिर वो एफ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा था, और ना ही वो क्या बोलते हैं ई के साथ कनेक्ट कर रहा था. तो डी वॉज द राइट ऑप्शन. myriad of choices, myriad of problems in the country. So, next question, guys. Russia's dash of Ukraine has placed considerable moral responsibility on India, both as one of the world's largest countries and its most dash democracy. So, Russia's dash of Ukraine, annexation, attack, yeah, invasion, has placed considerable moral responsibility on India, both as one of the world's largest countries and its most sought after democracy, populist democracy, या looked upon democracy. Very well done, guys. Keep it up. The correct answer was option number A. Russia's invasion of Ukraine. अटैक ऑफ यूक्रेन हो ही नहीं सकता. एनेक्सेशन हो सकता था, बट ए विद डी डजंट मेक सेंस. सॉट आफ्टर डेमोक्रेसी, ए विद डी वाज रॉन्ग. सो सी विद ई वाज द राइट आंसर. इन्वेजन and its most populous democracy. So correct option was C and E, invasion and populous.
यस एब्सोल्युटली सृष्टि। अगर आपको एक बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी को चेक करके देखो कि कौन वहां पे सही कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, एंड दैट वुड बी योर राइट आंसर। इन्वेजन ऑफ क्यों नहीं आता, किसने कहा नहीं आता यार? हाँ, कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो यार आप? कितना कॉमन सेंटेंस है। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये तो हर रोज सुनने को मिलता था जब से 1 साल से वॉर चल रहा था। दिस विल काम यू डाउन। ठीक है, चलो अब ये पैसेज हम बाद में करेंगे, इससे पहले हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं? अब ये वाले ऑड मैन आउट वाले करते हैं गाइस, ठीक है। चलो, तो यू आर गिवन 5 sentences and you have to find that one sentence which is odd one out. मास इन्वेजन ऑन अर्थ नहीं, ऑफ अर्थ होता है मधुमिता। अटैक ऑन होता है, इन्वेजन ऑफ होता है। Yes, guys. So you are given 5 sentences. You have to find which sentence is odd one out. On March 29, Assam and Meghalaya partially resolved a 50-year-old dispute along their 884.9-kilometer boundary. Meghalaya was carved out of Assam as an autonomous state in 1972. It was facilitated by Home Minister Amit Shah, who urged the states to resolve their boundary disputes by August 15, 2022. Okay. According to the partial boundary deal, Assam will get 18.51 square kilometer of this area, disputed area. Okay. Apart from Meghalaya, the other states are Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, and West Bengal. Yes, guys, which is the odd one out? वेरी वेल डन। देखो ये चारों सेंटेंस उस रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, बट दिस सेंटेंस डिड नॉट मेक एनी सेंस, सो दिस वाज द odd one out part. Apart from Meghalaya, the other states are Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, and West Bengal. Doesn't make any sense. Very well done, guys. So देखो 5 सेंटेंस पढ़ने तो पड़ेंगे, लेकिन एक मार्क गारंटेड मिल जाएगा आपको, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम line. Yes, guys, quickly read the sentences and tell me if there is an odd one out. Germany would not preach or teach India about its position on Russia's war in Ukraine. For the success of this platform, we require all countries to be present. If the Russian action goes unchecked, I think it will be really devastating for all of us. Mr. Plotner's visit coincides with a number of other visits to Delhi carrying a similar message on Russia, and all the statements are related to each other. The correct answer here is option number B. See, Germany would not preach or teach India about its position in Russia's war in Ukraine. If the Russian action goes unchecked, I think it will be really devastating for all of us. Mr. Plotner's visit coincides with a number of other visits to Delhi carrying a similar message on Russia. These three were connected. But for the success of this platform, we require all countries to be present doesn't make sense. So this was the odd one out. Next question, guys. Read the 5 sentences and find out which is the odd one out.
Very well done, guys. The correct answer was C. So guys, the BJP had constituted a 5-member team in the aftermath of violence in which 8 people were burnt alive. The 5 members, see, this was the connection. 5 members of the panel include Rajya Sabha member and former Uttar Pradesh DGP Brijlal. Following an order of Calcutta, the CBI has taken over the probe. जब उन्होंने 5-member team बना दी है inquiry के लिए, then what is the CBI doing there? That doesn't make any sense. Am I right? So the correct option was option number C. West Bengal BJP Chief Sukanta Majumdar, right, met BJP President JP Nadda and presented the report on Wednesday, and the report said, the state-sponsored extortion, gunda tax, and cut money were the main reasons for the violence, right? So these were connected. The option odd one out was option number C. Next question, guys. You're given 5 sentences. A World Cup like no other in its 92-year history will take shape this week. Qatar will be the top seeded team in Group A, taking position A1 in the schedule. Qatar's debut opens the tournament November 21 at Al Bayat Stadium. The entry list for the forthcoming Federation Cup Athletics has been released. It means in the group stage, Qatar avoids the world's top ranked teams from number 1 to 7. In UP? अरे उत्तर प्रदेश डीजीपी की बात कर रहा है यार, पढ़ तो लो. द 5 members ऑन द पैनल इंक्लूड, कि उस 5 मेंबर के पैनल में कौन कौन है? राज्यसभा मेंबर और फॉर्मर उत्तर प्रदेश डीजीपी ऑफ पुलिस, ठीक है, ब्रिजलाल. यूपी में इंसिडेंट नहीं हुआ, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को. यस गाइस, व्हाट इज द ऑड वन आउट हियर? आई थिंक फेयरली क्लियर है. रेस्ट 4 sentences they talk about the Football World Cup, FIFA World Cup, but Federation Cup Athletics doesn't connect with the sentences. Days B, I think anything above 18 is a very good score in English, if you ask me. Anything above 18 is an excellent score in English if the paper is moderate, right? If the paper is difficult, anything between 14 to 18 is very good. Cutoff will be 4.5, that is fixed. किसका वेटेज? इंग्लिश कौन सा? रीजनिंग 30 questions, 25 minutes, 30 marks. The weightage is 30 marks for 30 questions. That means one mark for every question. 18 तो आ गई युवराज, वेरी गुड. चलो अब चलते हैं गाइज अपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे जो हमने यहाँ पे स्किप किए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बेस्ट इंप्रूव फ्रेज ए? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बेस्ट रिप्लेस द वर्ड इंटीग्रेशन? ओके. We have to find the option, fill the blank in the given paragraph. We have to find the word which replaces phrase B, and then which of the following would replace the word enveloped in the paragraph. चलो, तो आपको यहाँ पे जो बोल्ड किए हुए ना और जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनका आपने सही आंसर ढूंढना है. सो लेट्स रीड द पैसेज. नहीं, 4.5 होती है कट ऑफ आयशा. 7.5 आपकी मैथ्स में होती थी पहले, ठीक है, अब वो भी 4.5 ही हो चुके हैं आई थिंक. तो फॉर इंग्लिश द कट ऑफ इज 4.5, नॉट 7.5 आयशा, ठीक है. ऑड मैन आउट, वन मार्क फॉर 1 क्वेश्चन के लिए सगमा. चलो I think the mock number 10, mock number 9, mock number 8. So these 3 will be exactly on the difficult level. This be. Chalo guys, let's read the passage together. Is the world at the cusp of another cataclysmic change? The world order, which was sketched by the integration of the Soviet Union, is up for another paradigm shift. If that happens, then the uncertainty will redefine the new international norms for some time. Every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the dash of the smaller and weaker states. Before the new norms settle down and solidify, the restlessness of the society, the anxiety of the individual, and the anguish of the civilization can always cause greater havoc. The First and the Second World Wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties. But those are the tales of a century back when the world was not technologically as advanced and neither was it so vastly open.
half of the civilization was still under darkness. But today the world is so strongly interconnected thanks to the internet, social media and smartphones that it is creating a new puzzle. At the time when so many choices are available, when the human mind is flooded with information, then why has so much negativity and bitterness enveloped the mind space? Why are the demons of hatred and selfishness ruling the human brain? Right? That is the choice of the creator of the paper, Mohit. He can put questions on any topic, right? No, obviously we can't predict anything, वैशाली. तो go वहाँ पे एक्सपेक्ट मत करके जाना कुछ भी ये आएगा और ये नहीं आएगा, बिकॉज आरबीआई इज नोन टू सरप्राइज स्टूडेंट्स. ये मैं बता देता हूँ, हर साल नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. वी कैन जस्ट अज्यूम बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि ये हो सकता है, ये आ सकता है, या ये नहीं आ सकता है. बट कंसिडरिंग द न्यू the redefining or the overhauling of the pattern of the exam, RBI will definitely surprise the students somehow. ठीक है. अब जैसे ये वाला पैसेज, अब इसमें देखो करना क्या है, कोई ब्लैंक नहीं है, आपको बोल्ड दिया हुआ है और हमें अब ऑप्शन करना है. देखना गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बेस्ट इंप्रूव द फ्रेज ए इन द सेंटेंस? फॉर द कस्प, इन, एट द कस्प ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, या इन द कस्प, या नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. यस गाइस, द फ्रेज ए इज द वर्ड एट द कस्प ऑफ अनदर कैटेक्लिस्मिक चेंज. And your options are for the cusp, in, at the cusp, for, on the cusp of, in the cusp, या no replacement required. Yes guys. Is the world at the cusp of another cataclysmic change? No, Amit. The cutoff is fixed at 4.5 for English. Is the world at the cusp of another cataclysmic change? अब एट द कस्प की जगह फॉर द कस्प, इन, एट द कस्प, फॉर, ऑन द कस्प ऑफ, इन द कस्प, या नो रिप्लेसमेंट. अगर गाइस आप फ्रेजेस अगर अच्छे से करके जा रहे हो तो यू वुड नो कि एट द कस्प नहीं होता, ऑन द कस्प होता है. इसका मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ. ठीक है, बिल्कुल कोने पे आ जाना. ठीक है, मतलब टू बी एट द ऑनसेट ऑफ समथिंग. सो इज द वर्ल्ड ऑन द कस्प ऑफ अनदर, नॉट एट द कस्प ऑफ. So it should be on, not in the. It should be on the cusp of another, on the brink of another cataclysmic change. The world order which was sketched by the integration of Soviet Union, right? So that was the right answer. Next question, guys. Which of the following options would best replace the word integration in the paragraph? So the world order which was sketched by the integration of Soviet Union is up for another paradigm shift. Integration हुआ था Soviet Union का. Unification, demilitarization, upsurge, या collapse, या no replacement required. Yes guys. Very good Ayush. Very good Chetan. Spam मत करो यार, एक बार आंसर कर दो, I'll read it for you. Very good. Yes guys, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था या इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन हुआ था? यूनिफिकेशन नहीं हुआ, डीमिलिटराइजेशन छोड़ देते हैं, अपसर्ज नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट तो रिक्वायर्ड है, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो कोलैप्स या डीमिलिटराइजेशन? So I think with the collapse of. So the correct option is option number D. So the world order which was sketched by the collapse of Soviet Union is up for another paradigm shift. The world order is about to change again. Right? अपसर्ज होता है जब किसी चीज में आपको बढ़ावा दिखता है. ठीक है, तो सोवियत यूनियन में बढ़ावा हुआ था. अपसर्ज क्या होता है? किसी चीज में बढ़ावा, जैसे द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैज सीन एन अपसर्ज. तो सीन एन अपसर्ज का मतलब लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं. दैट इज कॉल्ड अपसर्ज. ट्रांसफॉर्मर वर्ड का मतलब भी ढूंढना है हमें वहां पर, ये नहीं कि फिट करना है बस उसको, वो लॉजिकल भी होना चाहिए. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस विल फिल द ब्लैंक गिवन इन द पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली? इंक्लूजन, वल्नरेबिलिटीज, फॉर्च्यून्स, क्वांड्री. Yes guys, every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the dash of the smaller and weaker states. That increases the dash. Every change in the world has been followed by a spell of violence and human wickedness that increases the dash of the smaller and weaker states. That increases the inclusion of, that increases the vulnerabilities of, fortunes of, quandary of. अरे चिराग यार, सोवियत यूनियन यूनिफिकेशन हुआ था उसका या उसका कोलैप्स हुआ था? थोड़ा सा तो हमें यार मतलब कंटेक्चुअली भी करेक्ट होना पड़ेगा ना. सोवियत यूनियन टूट के रशिया बना था, अगर आपको याद है तो, कोल्ड वॉर के बाद इन 1991, 1990s, 1991, राइट?
Now, in this question, the correct answer is increases the vulnerabilities of. So every change in the world has been followed by a spell by a spell of violence and human wickedness that increases the vulnerabilities of the smaller and weaker states. Very good. Next question, guys. The first and the second world wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties. अब इसमें हमें क्या करना है? Which of the following options replaces the phrase be to make it grammatically correct and meaningful? तो phrase B देखना guys. The first and the second world war are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties. That were caused by deeper anxieties, those causing deep anxieties, towards creating deeper anxieties, yeah, by causing deep anxiety. I'll show you the context again. The first and the second world wars are examples and reflections of the changes that were causing by deep anxieties, or that were caused by, or those causing, or towards creating, or by causing. Very well done. The correct answer is option number A. So that were caused by deeper anxieties. The first and the second world wars are examples and reflections of the changes that were caused by deeper anxieties. Okay, so that's the right answer. And enveloped का हमें फिर I think ढूंढना है. At a time when so many choices are available, when the human mind is flooded with information, then why has so much negativity and bitterness enveloped the mind space? So we have to find the replacement for the word enveloped. Disregarded, ensued, faded, yet developed. Yes guys, क्या आना चाहिए? Then why has so much negativity, bitterness enveloped the mind space? Enveloped की जगह disregarded the mind space, ensued the mind space, faded the mind space, or developed the mind space, या no replacement required. No guys, the correct answer was no replacement required. Total time for RBI exam. यार आपका परसों एग्जाम है डियर, आपको ये नहीं पता टोटल टाइम कितना है मिलता है इस एग्जाम में. आई होप यू आर अपेयरिंग डे आफ्टर टुमारो. टोटल टाइम इज 120 मिनट्स, 2 hours. नहीं गाइज, एनस्यू का मतलब क्या होता है? फॉलो करना उसको. टू परस्यू, एनस्यू, स्यू मीन्स टू फॉलो. सू करते हैं ना हम, अमित कुमार, सू कर दूंगा तुम्हें, केस कर दूंगा. तो एनस्यू, परस्यू, सू एक ही वर्ड से डेवलप होते हैं, तो दिस मीन्स किसी का पीछा करना. सो एनवेलप्ड वाज द राइट आंसर. अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे. अब इस तरह से आपको ट्राई करना है गाइस अपना एग्जाम. स्टार्ट विद द शॉर्टर क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मूव टुवर्ड्स योर लॉन्गर क्वेश्चंस. ठीक है, ठीक है. इट द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर्स वर डीपर एंग्जाइटीज. दे वर कॉज्ड बाय डीपर एंग्जाइटी, मतलब जो मन में डर बैठा हुआ था सदियों से. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, लोग गरीब हो गए, फंस गए, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया 30 साल बाद, लोगों में और गरीबी आ गई. तो जो डीपर एंग्जाइटी जो टाइम के साथ साथ जो उनके मन में बैठ जाती है, तो उनको वो इस तरह से, देखो एक जनरल कंपैरिजन भी तो होता है ना अमित. जैसे हम बोलते हैं कि यार मान लो आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिलते हो, तो आप बोलते हो यार यू हैव ग्रोन टॉलर, कि तुम तो लंबे हो गए हो यार. टॉलर, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हो? पहले से, राइट. सो इसलिए डीपर वहाँ पर वो एक नेचुरल कंपैरिजन होता है अमित. ठीक है, जैसा बोलते हैं यार तुम वो तो बहुत मोटा हो गया, ही हैज़ ग्रोन फैट या ही हैज़ ग्रोन फैटर, मतलब उसी की पिछली कंडीशन से आप उसको कंपेयर कर रहे हो. तो द कंडीशन हैज़ ग्रोन डीपर, उस सेंस में वो यूज़ करता है. चलो गाइस, तो पैसेज को कैसे सॉल्व करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. ठीक है, 3 statements have been given below. You have to read the same and choose the which of the following would correctly take the idiom see eye to eye. ठीक है, अब आपको ये idiom का सही यूज देखना है. Which of the following options explains the opening line of the passage? ठीक है, ये आपका इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट को इन्फर करना होता है. विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मिस बैनर्जी मोस्ट लाइकली एग्री? मिसेस बैनर्जी would most likely agree as per the passage. ये भी इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है. Which of the following has been cited as the reason that justifies the actions of the Telangana governor not being allowed to address the budget session? Okay.
एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स एज पर द कंटेंट्स। अब ये देखो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इन्फ्रेंशियल आ गए हैं, बस एक ये है जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लॉजिकल है कि आपको 3 सेंटेंस दिए और आपको 3 वर्ड दिए और आपको ढूंढना है कि इन तीनों में से कौन सा किससे कनेक्ट करता है। एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी मार्क्ड एज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो कोई इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, सारे इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस थे एक्सेप्ट दैट वन, मैच ऑफ द कॉलम, और एक ये सी आई टू आई। तो उसमें आप 2-3 क्वेश्चन टारगेट कर सकते थे गाइज, अगर आखिर में 2-3 मिनट बचे हुए हैं तो अब पढ़ते हैं और इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की गाइज, ठीक है। चलो गाइज, सो लेट्स रीड द पैसेज एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज, गाइज ध्यान से पढ़ना है इसको, आई रीड इट आउट फॉर यू। Two contrasting issues concerning the legislature in two states appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye। मतलब वो एक दूसरे से एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है। So two contrasting issues concerning the legislature in two states appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye. In the West Bengal Assembly, Chief Minister Mamata Banerjee and legislators of her party had to virtually plead with Governor Jagdeep Dhankar to start reading his customary address amidst a prolonged uproar by the opposition BJP MLAs. Mr. Dhankar appeared ready to give in to the protesters but was ultimately persuaded into reading the first and the last lines. In Telangana, on the other hand, the K. Chandrasekhar Rao government seems to have decided not to have Governor Tamilisai Soundarajan address the legislature before it presented this year's budget. तो तेलंगाना में उन्होंने उनको गवर्नर को बोलने ही नहीं दिया, तो they have decided not to have governor address the legislature before it presented this year's budget. Instead, it is treating the current meeting of the legislature as a continuation of the last session. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो current meeting है, this is a continuation of the last session. That the session which last met some months ago was not prorogued has given scope for the government to contend that it is just a further meeting and it is not necessary for the governor to open it with an address. The ceremonial address is usually delivered in the first session of every year. Dr. Soundarajan has issued a rare statement to argue that the government's position was technical and it would not be proper to commence the budget session without her address. The episode appears to arise from points of conflict between the government secretariat and Raj Bhavan, as the ruling TRS seems aggrieved that the governor deviated from the text of her address last year and on some other issues too. अच्छा, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपने एड्रेस से डिविएट हो गई थी वो, और कुछ और भी इश्यूज उसमें आ रहे थे। The governor's address is a constitutional formality. The governor's address is a constitutional formality, albeit a significant one, as it is essentially a statement of policy of the regime of the day, right? That the formal occasion is mired in political wrangling is a sign of institutional decay and unwarranted politicization of constitutional norms. That Mrs. Banerjee saw the incidents in the assembly, which almost resulted in the abandonment of the governor's address, as an attempt to create a constitutional crisis, shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition. It will be desired if the same recognition is seen in Telangana too. After all, if not now, the next session will have to open with the governor's address. It is true that there are sound arguments that question the need and the relevance of the office of the governor, or support the view that some incumbents are politically partisan. Now, there may even be a case for doing away with the formality, or even arguing that the policy statement is better read out by the elected chief minister. However, as long as the current system is in vogue, there is a case for abiding by the norms. Politics notwithstanding, it is only in such formality that civility in public discourse is expressed. ये तो ठीक ठाक है, not 600 to 700 but at least 5 मतलब 4 between 400 to 500 words का आरसी होता है अमित इसमें। हाँ, व्हेन यू सी आई टू आई मतलब आप एक दूसरे से एग्री कर रहे हो, बट इफ यू डू नॉट सी आई टू आई कुमार ऋतुराज, देन दैट मीन्स आप एक मतलब उसमें एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो। So 3 statements have been given below. You have to read the same and choose which of the following would correctly take the idiom see eye to eye. So that house on the CP square certainly see eye to eye. Should we take a look inside?
Second, they said they were ending the contract because they didn't see eye to eye with their clients. Third, after she found out about his latest relapse with drugs, she decided it was best to see eye to eye. Yes, guys, which sentence has used the can use the idiom see eye to eye in the right context? Very well done, guys. The correct answer is only option number B. They said they were ending the contract because they didn't see eye to eye. मतलब वो एग्री नहीं कर रहे, दे डिड नॉट सी आई टू आई विद देयर क्लाइंट्स, के क्लाइंट्स और उनके बीच में सहमति नहीं हो रही. सो करेक्ट ऑप्शन वाज ओनली ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन्स द ओपनिंग लाइन ऑफ द पैसेज? ओपनिंग लाइन क्या थी गाइस? Two contrasting issues concerning the legislature in two states appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye. Yes, guys. So, what does this statement infer? The governors in the mentioned states have forgotten their line of duty and need to be made aware of the same. The elected governments are trying to impose their superiority in the states as they do not wish to function in alignment with the center. Two states are facing the same issue of visible tussle between the governor and the state government, however, for completely opposite issues. D is both B and C, and E other than the given options. Very good, Sunny. Very good, Abhishek. The opening statement is not option D, it's option C. लग रहा था कि बी भी है, लेकिन गाइस देखो दोनों में केस में क्या हुआ था. देखो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, जो गवर्नर थे आप वहाँ के धनखड़, मिस्टर धनखड़, अब वो उनको ओपनिंग एड्रेस करने नहीं दे रहे थे ऑपोजिशन वाले, राइट? बिकॉज वो क्या कह रहे थे कि दिस इज मतलब, अब ये देखो आपने यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो, हाँ एमएलए बीजेपी एमएलएस, ठीक है. तो what happened was in the West Bengal Assembly, Chief Minister Mamata Banerjee and legislator of her party had to virtually plead with the governor Jagdeep Dhankar to start reading his customary address amidst a prolonged uproar by the opposition BJP MLAs. Mr. Dhankar appeared ready to give in to the protesters कि वो हार मानने ही वाले थे, but was ultimately persuaded into reading the first and the last lines कि पहली और लास्ट लाइन पढ़ दो और इसको हम शुरू करते हैं. In Telangana on the other hand, जो गवर्नमेंट थी कि they decided not to have governor Soundarajan address the legislature before it presented this year's budget. कि बजट से पहले उनको एड्रेस ही नहीं करने दिया. उन्होंने बोला कि दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन. सो दीज वर टू ऑपोजिट इश्यूज. सो ऐसा नहीं है कि दोनों में ही स्टेट गवर्नमेंट अपनी सुपीरियोरिटी दिखा रही थी. वो तो ये शो कर रहे थे कि देयर कैन बी एंड देयर आर मेनी रीजंस ऑफ क्लैश बिटवीन द गवर्नर एंड द रूलिंग गवर्नमेंट, राइट? So the correct option was option number C. Very well done, guys. Next question. With which of the following would Miss Banerjee most likely agree as per the passage? The traditional practices must be abided by as a mark of respect to our constitution, if not anything else. Things should be continued as they are since they are in fashion, as breaking of rules by the government is not desirable. Okay, and Telangana and West Bengal are two entirely different geographies, and what happens in one won't dictate what happens in other. Now, which of the following would Mrs. Banerjee most likely agree as per the passage? Yes, guys. अब ये इन्फ्रेंशियल है. ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए जहां पे आपको लग रहा है ना कि यार ये ठीक नहीं बन रहा सर मुझसे, वहां पे जानबूझ के मत करना, ठीक है? यहां पे था इसका आंसर. ये देखो, the governor's address is a constitutional formality, albeit a significant one, as it is essentially a statement of policy of the regime of the day.
ठीक है, it depends on the policy of the regime of the day. That the formal occasion is mired in political wrangling is a sign of institutional decay and warranted politicization of constitutional norms. That Mrs. Banerjee saw the incidents in the assembly which almost resulted in the abandonment of the government's address as an attempt to create a constitutional crisis. ठीक है, shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition. It will be desirable if the same recognition is seen in Telangana too. So it shows that the constitutional significance to the tradition. Okay, that means the right answer, the traditional practices must be abided by as a mark of our respect to the constitution. So correct answer is only option number 1. So option D is the correct option. Got it? Very good mediation. Very good Ben Skinch. Very good Priya. Very good Sunny. Very good Yogesh. Next question, guys. Which of the following has been cited as the reason that justifies the actions of the Telangana governor not being allowed to address the budget session? Okay, क्या reason दिए गए हैं? So I'll give you the paragraph here. This is the issue. See, the ceremonial address is usually delivered in the first session of every year. Dr. Soundarajan has issued a rare statement to argue that the government's position was technical and it would not be proper to commence the budget session without her address. The episode appears to arise from points of conflict between the government secretariat and Raj Bhavan, as the ruling TRS seems aggrieved. ठीक है, वो गुस्से में लग रहे हैं, aggrieved that the governor deviated from the text of her address last year and on some others issues too. So what were the given reasons? What were the which of the following has been cited as the reason that justifies the actions of the Telangana governor not being allowed to address the budget session? That the practice of the addressing before the session is not valid, as the head of the elected government should be the one who should open the discussion. The governor, while addressing the last time, made some derogatory remarks over the state of the affairs, making the episode questionable. The West Bengal governor was found indicating in his address that the governors have now stopped interfering in government affairs. No, यहाँ तो बात उसकी हो ही नहीं, तेलंगाना की बात हो रही थी. The state government found that the governor, while addressing, went awry, leading to a conflict between the two authorities. Yeah, none of the above. अब ये इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन जो होते हैं ना गाइस, ये कंफ्यूज कर देते हैं बहुत. You have to be very, very accurate with your answers in such questions. Very good, Amit. The correct answer was, very good, Jagruk Nagrik. The correct answer was option number D. मैंने मार्क भी कर दिया आपके लिए, तब भी देखो गलत क्या कर रहे हो. ये देखो क्या बोल रहा है. The episode appears to arise from the points of conflict between the government and the Raj Bhavan, as the ruling TRS seems aggrieved. गुस्से में वो क्यों लग रहे हैं? That the governor deviated from the text of her address last year and on some other issues too. Deviated from her address, मतलब जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और बोल गई वो. So while addressing last time made some derogatory remarks. ये कहीं दिया नहीं हुआ, लेकिन the government found that the governor while addressing went awry. मतलब उन्होंने कुछ गलत पढ़ दिया, leading to a conflict between the two authorities. So that was the right option. Exactly, Amit. Very well done. So correct option was option number D. Next question, guys. Which of the following statements is false as per the contents of the passage? Telangana government had discontinued the previous session without dissolving the same. The Telangana had discontinued the previous session without dissolving the same. Ms. Banerjee was finally able to cajole the governor to at least read the first and the last lines to begin the session. Yes. Both the CMs mentioned have been known to have animosity towards the center, and hence their state governors behaved the like. Yes, guys, which of the following statements is false as per the contents of the passage? देखो ये तो बिल्कुल सही है ना यार, कि बैनर्जी जी ने गवर्नर को, धनखड़ को पहली और फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट पढ़ के सेशन शुरू करने को बोला था. तो अगर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है तो हम ये वाले एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो गलत हो ही नहीं सकते, राइट?
तो 2 वाला तो एलिमिनेट हो गया. Now Telangana government had discontinued the previous session without dissolving the same. Yeah, both the CMs mentioned have been known to have animosity towards the center and hence their state governors behaved the like. कि ये कहीं पे मेंशन है स्पेसिफिकली. Both 1 and 3 are false. कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को राजी कर लेना कुछ काम करने के लिए. ठीक है, कैन यू कन्विंस हिम, क्या तुम उसको राजी कर सकते हो, मना सकते हो, तो दैट्स कन्विंस. द तेलंगाना हैड, देखो ये फर्स्ट वाला देखते हैं एक बार. द तेलंगाना गवर्नमेंट हैड डिसकंटिन्यूड द प्रीवियस सेशन विदाउट डिसॉल्विंग द सेम. ये कहाँ पे दिया हुआ है देखना एक बार. ये देखो क्या कह रहे हैं. Decided not to have governor address the legislature before it presented this budget. Instead, it is treating the current meeting of the legislature as a continuation of the last session. That the session which last met some months ago was not prorogued. उसको खत्म नहीं किया गया था. ठीक है, it was dissolved. It was not dissolved. It has given scope for the government to contend that it's just a further meeting and it is not necessary for the government to open with an address. ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहा है कि उसको डिसॉल्व नहीं किया गया था, तो दिस इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, कि हैड डिसकंटिन्यूड, ये गलत है. तो उसको द तेलंगाना हैड डिसकंटिन्यूड द प्रीवियस सेशन विदाउट डिसॉल्विंग द सेम. तो ये बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन 3 वाज रॉन्ग. सो दिस इज नोवेयर मेंशन्ड. सो द करेक्ट आंसर हियर वाज नॉट ऑप्शन डी, इट वाज ऑप्शन बी. कजोल नहीं. हाँ, कजोल का मतलब होता है कुछ भी बोल के, कुछ भी कह सुन के उसको अपनी बात मना लेना, कन्विंस कर लेना, कजोल. यस, तो दैट इज अ सिनोनिम फॉर कन्विंस. वेरी गुड अमित. So the correct option was option number B. Next guys, choose the best option based on the words given in the column 1 below taken from the passage. तो आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे A, B and C, और आपको देखना है किस ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट बैठता है. The dash president faces problems which began many years before he took office. The dash president faces problems. The wrangling president, incumbent president या uproar president. I think this should be B. The incumbent president. Next, the movie Kashmir Files has caused an wrangling या uproar. I think uproar on Twitter. So this should be C. We find some people in our house who engage in wrangling. मतलब बहलाना फुसलाना. So that should be A. In order to simply to feel superior. So I think B, C, A. Yes guys, which is the right option? B, C, A. Option A is the correct option guys. फर्स्ट में, अच्छा सॉरी, A3 में आना. रुको रुको रुको, मैं शायद, अच्छा मैं गलत उसको वो कर रहा हूँ. सो A होना चाहिए 3 में, ठीक है, B होना चाहिए 1 में और C होना चाहिए 2 में. हाँ, तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, नॉट A. यस गाइज, मैं उसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहा था. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी मार्क्ड एज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? The differences between the leaders should not lead to politicizing of constitutional norms. The constitution and its norms at risk of disrepute while the leaders decide not to give in. The rift between the center and the states getting wider. The governors and their realm of power should be rethought about. The elected state governments and the need to cooperate with the administration. Yes, guys. Yes, Mehak, your comments are visible. Yes guys, what can be called the central theme of the passage? Absolutely you can omit such questions आयुष. जो आपको लगे कि गलत हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझसे नहीं बन रहा, उसको स्किप कर दो, नहीं तो वो आपको गलतियां ज़्यादा करके आओगे. गाइस, देयर आर 2 थिंग्स, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी. एफिशिएंसी आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पाते हो, और एक्यूरेसी इज उनमें से कितने ठीक होते हैं. अगर आप 25 अटेम्प्ट करके 10 गलत कर दोगे, राइट, यू विल स्कोर 12.5 मार्क्स. लेकिन अगर आप सिर्फ 20 अटेम्प्ट करके 18 या 17 ठीक कर दोगे, तो यू विल गेट 16 या 16.5 मार्क्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सिंपल मैथ्स है जो आपको स्ट्रेटेजाइज करके जाना पड़ेगा. ये आपको इन्फर करना पड़ता है अमन, कि पूरे पैसेज में क्या कहा गया है.
The differences between the leaders should not lead to politicizing of constitutional norms. I think the government and the governors and their realm of power should be rethought about. The rift between center and the states getting wider. देखो वो क्या कह रहा है, देखो ये ना हमेशा कैसे ढूंढा जाता है कि क्या कहना चाह रहा है, जो नहीं ये हमेशा लास्ट की लाइनों में होता है, ठीक है, कंक्लूजन क्योंकि वहीं पे लिखा होता है। तो अगर आपको कभी भी ये ढूंढना है ना कि क्या कहना चाह रहा है, तो लास्ट की लाइनें पढ़ो कुछ। आफ्टर ऑल इट इफ नॉट नाउ द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू ओपन विद द गवर्नर्स एड्रेस। इट इज ट्रू दैट देयर आर साउंड आर्ग्यूमेंट्स दैट क्वेश्चन द नीड एंड द रेलेवेंस ऑफ द office of the governor or support the view that some incumbents are politically biased, partisan. There may even be a case for doing away with the formality कि भाई ये formality खत्म करते हैं, क्यों बार बार गवर्नर को हर साल आना है, or even arguing that the policy statement is better read out by the elected chief minister कि यार गवर्नर की चीफ मिनिस्टर को पॉलिसी स्टेटमेंट बोलना चाहिए। However, as long as the current system is in vogue, जब तक current system चल रहा है, there is a case for abiding by the norms कि भाई हमें norms follow करने पड़ेंगे जब तक ये change नहीं होता। Politics notwithstanding कि politics को ना ध्यान रखें, it is only in such formality that civility in public discourse is expressed कि भाई civil होना इसी तरह से express किया जाता है कि जो norms हैं उसी को follow किया जाना चाहिए। So it should not be, the correct answer is the differences between the leaders should not lead to politicizing of constitutional norms. So that would be the central theme of the passage कि चाहे मनमुटाव है लेकिन उसको politicize नहीं करना चाहिए, उसको एक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। So that is the right answer. Very good Kumar, Rituraj. Yes, कल भी है मेरा session guys. So guys, now quickly give me the final score out of 30. How many did you get right and how many you got wrong? और वो eliminate कर लेना, 0.25 marks for every wrong answer deduct कर लेना, and then give me your final score out of 30. Okay, let's assume कि ऐसा सा कुछ moderate से थोड़ा moderate से ज़्यादा अगर ऐसा पेपर एग्जाम में आ जाता है तो what would be your score? 12.25 out of 16. Very good मुस्कान, good accuracy. राइट बस अब हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। 15.25 वेरी गुड चिराग। 16 वेरी गुड अनुष्का। कैलकुलेट करना चाहिए था अखिल तेज। 15.75 उदित नॉट बैड, करना चाहिए था अखिल तेज। 15.75 इकबाल वेरी गुड। 26 प्रिया। गाइज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रिया, कीप अप द गुड वर्क डियर। 18 वेरी गुड अमन। 12 we can do better Nirmiti. 18 very good Sunny. 21 very good Himanshu. 9 wrong उसको deduct कर लो उसमें से, तो that means 18.75 Himanshu, not bad still. Sandeepan 18.5 very well done. 60 to 65 I think it should be above 70 to 75 for that. 22 right, 3 wrong, तो very good Muskan, very well done. 24 very good Mehak. Abhishek 15.5 not bad dear, we can do better. 24 right, 6 wrong, मतलब 22.5 Kumar Rituraj very well done. We could have done better Mohit, है ना, थोड़ा सा और better कर सकते हैं हम। Himanshu 18.75 not bad. 14 Vishaka we could have done better, थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे हम Vishaka. 24 out of 22, 24 में से 22 very good. 22 out of 24 very good, so that means 21.5 Priya not bad. Aman Anudeep we could do better. Vishaka, we should score a little higher. Ayush 24, keep up the good work dear. So guys, if you score beyond 20 in such paper, beyond in such mock test, you will be able to score beyond 18-19 marks in the actual exam, right? So that is your so you can calm down yourself, you can calm yourself down and understand कि यार if I'm able to target and if I'm able to achieve this many this many answers and if I'm able to score this much, I think I'll be able to do it in the actual day. So Himanshu, you can connect with me. You can arrange a strategy call or you can call me on the number given on the screen 8146207241 या फिर ये email address जो आपको दिया हुआ है hello@edutap.co.in. So you can drop us an email and our support team will connect us. ठीक है? Got it Himanshu? Please ask Honeybee Drive. अमन, मिनिमाइज करने का तरीका यही है, टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट,
फाइंड आउट योर कीवर्ड्स एंड देन रीड द पैसेज ओनली वंस. एक बार पढ़ना है उसको, बार बार नहीं पढ़ना है. तो रिवर्स रीडिंग इज द ओनली की इन सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्विकर. एंड अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो रीडिंग की, अगर आप डेली रीडिंग हैबिट में हो, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स ये पढ़ते हो आप, तो आई थिंक दिस विल बिकम ईजी फॉर यू. डिक्रीज भी हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन, अगर पेपर अलग अलग आ जाते हैं तो प्रिय बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन डिक्रीज भी होता है, बट यूजुअली कम नहीं होता, यूजुअली बढ़ता ही है. Yes, Sandeepan, 18.5 was not bad in that paper. करने चाहिए उदित, व्हाई नॉट, करने चाहिए. जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा परफॉर्म करके आओगे. तब ये नहीं है कि कल से लेके 2 दिन तक आरसी 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 कर रहे हैं. बस बैलेंस करो भाई, दिन में 3 या 4 कर लिए आरसी, दैट वुड बी एनफ. मॉक टेस्ट लगाओ जितना ज़्यादा हो सकता है. जैसे सुबह उठ के एक मॉक टेस्ट लगा लिया आपने, 2-3 घंटे का ब्रेक लिया, फिर एक और मॉक टेस्ट लगा लिया. अभी तो सिर्फ मॉक टेस्ट काम करेंगे क्योंकि आप यू हैव टू गेट इन टू द सिमुलेशन ऑफ द टाइम. लास्ट के 2-3 दिनों में तो गाइस गाइस टाइम सिमुलेशन होता है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो और आपका टारगेट कितना होना चाहिए. दैट शुड बी योर कंसर्न राइट नाउ. इस टाइम पे अगर आप शुरू कर रहे हो कोई चीज़, दैट इज़ ऑलरेडी टू लेट, कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं. तो इस टाइम पे तो आपको क्या करना चाहिए, बस मॉक टेस्ट लगने चाहिए आपके दिन के 2-2 3-3, और उनसे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करो कि यार कहाँ पे मैं ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ये मेरा वीक सेक्शन है, इस पे मुझे काम करना है, और ये इसको मुझे बिल्डअप करना है. राइट. रीअरेंजमेंट में कुमार ऋतुराज, एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका है, आप एक बार फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लो और फिर अपने ऑप्शंस को ब्रेक कर लो. फर्स्ट सेंटेंस ढूंढा और अपने जो क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे फिर ब्रेक कर लो कि क्या सही सीक्वेंस बन रहा है वहाँ पर. अगर आपको फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट मिल जाता है तो यू विल एटलीस्ट गेट 2 मार्क्स. अगर आपको पूरा सॉल्व हो जाता है तो यू विल गेट 5 मार्क्स. ठीक है. तो ये है इसकी ट्रिक कि अपना फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट से अपने ऑप्शन एलिमिनेट करके और उसको बिल्डअप किया करो फिर बाय यूजिंग अ चेन रूल, जो चेन रूल मैंने आपको समझाया हुआ है कोर्स में. कनेक्टर वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कल हम करेंगे कनेक्टर वाले क्वेश्चन में हनी वी ड्राइव. ठीक है, कल हम करेंगे प्रिया वो वाले क्वेश्चंस. सिनोनिम एंटोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझा करो संदीपन, क्योंकि स्टैंड अलोन क्वेश्चंस नहीं होते. वो वोकैबुलरी जो होते हैं वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही बेस्ड होते हैं. तो जिस सेंटेंस में वो वर्ड दिया हुआ है उस सेंटेंस में वो कैसे यूज हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट को समझा करो. Right, and if you are able to eliminate the options and find the right answer, then go for it, otherwise you can also skip it. नॉर्मलाइजेशन में कुछ होगा नहीं प्रिया, वैसे आरबीआई में होता नहीं है बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन या मॉडरेशन. ठीक है, आरबीआई में वो मोस्टली इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि पेपर हम बराबर लेवल का ही बना के चले. सो प्रॉबली आई हैव नॉट सीन नॉर्मलाइजेशन इन आरबीआई वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी ऑफन. ठीक है. तो गाइज, हाउ वाज द सेशन? आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप इट वाज हेल्पफुल. और अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट. And then tomorrow we will we'll discuss more such questions, we'll practice more such questions, same time, same place, 7 p.m. tomorrow. So I'll see you again guys. Till then guys, please stay safe. बीमार मत पड़ जाना है क्वेश्चन एग्जाम से पहले. प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ. पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ गाइस. अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको नहीं बदल सकते आप. अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि यार हाउ कैन आई लुक फर्दर, लुक बियॉन्ड द एग्जाम, कि मुझे एग्जाम वाले दिन की चिंता नहीं करनी है, उसके बियॉन्ड सोचना है कि यार मैं कैसे उसको क्रैक करके आगे निकलूंगा. तो स्ट्रैटेजी बनाओ कि कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है, पहले छोटे क्वेश्चन करने हैं, उनमें से कितने स्किप हो गए हैं तो फिर आगे हमें कैसे बिल्डअप करना है. तो एक वो जिसको हम बोलते हैं ना, एज यू गो अलॉन्ग यू इम्प्रोवाइज. तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे पता नहीं कौन से सब्जेक्ट मुश्किल आ जाएगा परसों. राइट. सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, इन पीस विद योर सेल्फ. पैनिक नहीं करना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि यार इतना पढ़ लिया है जब, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट. राइट. ईडियम फ्रेजेस अलग से सेशन नहीं कर पाएंगे एक बार, अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस कर पाएंगे. सो आई एम सॉरी इट विल नॉट बी पॉसिबल, बट आई होप कि कल आपको कुछ क्वेश्चन में ईडियम्स के, फ्रेजेस के, फ्रेजल वर्ब्स के, कनेक्टर्स के और वो वाले लेके आऊँ, सो दैट हम और उसको बिल्डअप कर पाएँ. आई कैन डू दैट, बट अलग से एक सेशन नहीं हो पाएगा यार, 2 दिन तो बचे हैं अभी इसमें. राइट. चलो गाइज, तो लेट्स रैप अप द सेशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर रिसेप्टिवनेस. आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड.
गाइज जस्ट स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव इन योर हेड एंड आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, जस्ट अपने आप पे फेथ करके चलो गाइज। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। याद रखना, पैनिक करोगे तो हारोगे, अपने अपने आप को डरोगे डरोगे तो यार हमेशा गलतियां ही होंगी, ठीक नहीं होगा उससे कुछ भी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि पैनिक करके डर के तो कभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाओ और स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना टाइम सिमुलेशन को फिक्स करके और फिर अपने ऑप्शंस को और अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करने की हैबिट में आ जाओ। आई थिंक इफ़ यू मेक इट थ्रू फेज 1, फेज 2 विल बिकम ईजी फॉर यू। तो अपना सॉल्यूशंस ढूंढने हैं हमने वहाँ पे अपने, ठीक है, विदाउट पैनिकिंग। तो दैट शुड बी योर अप्रोच। विल डिस्कस मोर टुमारो गाइज। सो गॉड ब्लेस you all. Stay safe guys, stay healthy, and happy learning to all of you guys. I'll see you again tomorrow. Till then, stay safe, and keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the exam guys.